Now that you've gotten the fantasy team, let's get to that. Let's select the Dream 11, gentlemen. I'll start with you, Pragyan. Go for it. You're putting all your, you know that I'm the weak link here. Okay. I saw Boryada's team. I really liked it. To be very frank, I really haven't understood how it goes. I'm trying to learn the way Boryada. The other day, Boryada was, in the group, he was chatting like, this bowler, the Russell can bowl and get those wickets. And that's why it's very easy for him. For me, I see the game in a very different way. I see like a proper cricket kind of a way. So I'll go with Boryada's team. I think that'll do wonders. All right. Maybe one. We'll put out that team, by the way, for our viewers. We'll put that team out. Maybe one. Ridhima, I've got to make this point, and I was explaining before the show, and then Rajeshi and you can give your teams. That people come to us and say, "अरे भाई हम क्यों नहीं जीत रहे हैं?" Yeah. अरे यार जीतोगे क्या? रोहित शर्मा ने 40-50 मारा है इन हिज आईपीएल करियर इन 200 गेम्स. अगर तुम रोहित शर्मा को कैप्टन बनाते हो तो 5 में एक ही बार जीतोगे ना. एंड यहाँ पे आप एक रोहित शर्मा नहीं 22 लोगों को लेके खेल रहे हो, उस पे आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो वो कॉम्बिनेशन राइट हो जाना, प्रॉपर आपको नॉलेज लगेगा. आप ऐसे जाके जीतने जाओगे, इम्पल्स में खेल दिया पैसे जीत गया, अरे कम ऑन यार, ऐसे नहीं जीतोगे. सो दैट इज फैंटेसी इज नॉट इजी टू विन कि मैंने खेल लिया जीत गया. नो सर. आई विल गिव यू वन मोर टिप टुडे फॉर फैंटेसी. अगर आप इस टूर्नामेंट में रन्स देखें, एवरेज रन्स देखें, how many 130-40 finishes have you seen? Hardly any, right? You have seen 170, 180, 190, 200. That's your ballpark. Basically 170 to 200. कल भी अगर आप देखें 210, शारजा छोड़ दीजिए. Even second game 180, 180. So what does that tell you? And at an average कितना विकेट जा रहा है? 4 या 5. करेक्ट. सो हर बॉलर 1 या 2 विकेट ले रहा है मैक्सिमम. कोई भी बॉलर आपको देखा 3-4 विकेट ले लिया उसने? नहीं लिया ना. सो अगर एक बॉलर मैक्स 2 विकेट ले रहा है तो कितना पॉइंट देगा आपको? 29 into 58 points, right? So a bowler max to max, if he's taking 1 he's giving you 29, if he's taking 2 he'll give you 58 points. Now कितना मैच में आपने देखा है बैट्समैन ने 50 मारा है? हर मैच में देखा है आपने. और वो 50 में कितना बाउंड्री, कितना ओवर बाउंड्री होगा? एटलीस्ट 5 या 6 बाउंड्री, 2 ओवर बाउंड्री होंगे, राइट? सो अगर आप 50 में 50 पॉइंट प्लस बाउंड्री प्लस ओवर बाउंड्री का पॉइंट लगा लें तो आप देख लीजिए किसको किसको वाइस कैप्टन बनाना है. सो बैटिंग पैक कर दीजिए. दिल्ली और ये बैंगलोर का मैच में बैटिंग पैक कर दीजिए. डाल दीजिए विराट कोहली, एरन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन हैजंट फायर्ड, सो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, डाल दीजिए इस 6 सारे को. दैट्स योर पंट. 2 बॉलर्स डालिए, ये कागिसो रबाडा एंड युजवेंद्र चहल, क्योंकि इनको हर मैच में विकेट मिला है. एंड देन लास्ट कॉम्बिनेशन, ये 8, अगर आप मल्टीपल टीम से फैंटेसी खेल रहे हो ना, 8 टीम 9 टीम, मैं तो 11 टीम से खेलता हूँ. मैं 11 टीम से फैंटेसी खेलता हूँ. आई मेक 11 टीम्स एंड आई प्ले बिकॉज आई लव इट. एंड आई डोंट प्ले इट फॉर विनिंग मनी. आई डू विन. I'm putting it on record. I've won big money on fantasy, but I play because I love it. I like the permutations, combinations, etc. So अगर आप ऐसे खेल रहे हो, पूरा बैटिंग पैक कर दो और ये 8 प्लेयर को कांस्टेंट रखो. जो मैंने बोला 6 बैट्समैन 2 बॉलर, ये 8 को कांस्टेंट रख के लास्ट 3 को फ्लेक्सिबल कर दो. क्योंकि वो लास्ट 3 एक दिन सिद्धार्थ कौल 2 विकेट लेके जाएगा. कल देख लीजिए सिद्धार्थ कौल was better or Natarajan was better. Pragyan Ojha will tell you Natarajan was 200 times better. Now I'll tell you fantasy में किसको पॉइंट मिला? सिद्धार्थ कौल को पॉइंट मिला, नटराजन को 0 पॉइंट मिला, क्योंकि उसने विकेट नहीं लिया. ये फैंटेसी अलग है बॉस. फैंटेसी अलग गेम है. ये क्रिकेट नहीं है, ये फैंटेसी स्पोर्ट है और उसको फैंटेसी स्पोर्ट की तरह खेलिए. This is fantastic. This is like a crash course in selecting a Dream 11 and playing fantasy game. But these are very, very interesting points. Really interesting points. Rajji, you agree with Borea's Dream 11? You want to make any changes there? Absolutely. No. If you look at my Dream 11, it's based on his theories and his expertise, because he's very right. When you're picking up a fantasy team, right, you're not quite thinking like a captain. The other day we were discussing, Pragyan, I was telling you that, I woke up in the middle of the night wondering whether I should have M. Ashwin or Mujib in the lineup, because now you're starting to think of points. You also remember you're picking up a captain and vice captain, because in certain times in certain fantasy games, the captain doing well, you get twice the points.
Similarly with the vice captain, you pick up your vice captain basis that, not based on emotions. Yeah. So that's why you pack your team with, sometimes depending on conditions, obviously wherever you're playing. So if in Sharjah, like Bori also mentioned the other day, when you're playing in Sharjah, तो आपको बैट्समैन पे फोकस करना पड़ेगा. आपको वहां पे शारजा में आपको 130 डिफेंड होते हुए नहीं दिखेंगे, आपको 160 डिफेंड होते हुए नहीं दिखेंगे. बहुत अच्छी बॉलिंग अगर कोई करता है, जैसे मुंबई इंडियंस ने दिखाया था संडे को, they restricted the opposition to under 200. That is a very very rare scenario. You have bowlers like, you don't, every team doesn't have Trent Bolt and Pattinson steaming in, giving away 7.5 runs in the 4 overs at a venue like Sharjah. So, for example, I have packed my team with batsmen and all-rounders. I have obviously Devdutt Padikkal. I have Prithvi Shaw, Rishabh Pant. I'm backing him to do wonders at some point in time. Hopefully, sometime tonight against RCB. AB de Villiers, Shreyas Iyer, Virat Kohli. Marcus Stoinis had to be there because he can deliver. He can deliver with the ball. He will, if he gets to bat higher up enough, he will. He has the chance to also, potential to also deliver big with the bat. And then the bowling was pretty simple. You have because again, depending on the venue, so I have to have the 3 best pacers I could lay my hands on. It was Rabada, Neuer, Saini, and you can't go without Yuzvendra Chahal, who is so far the purple cap holder in the IPL, and he will, I think, make an impact in any condition. So you got to, well, like Boria said, you cannot play fantasy cricket with basis on emotion. आपको समझना पड़ेगा. आपको उन्होंने day 1 में बोरिया ने ये भी कहा था, you have to look at 2 or 3 factors. You have to look at the venue. आप कैप्टन्स की बात सुनिए टॉस पे. आप इंजरी अपडेट्स रखिए. ऐसा नहीं कि आप अपने टीम में भुवनेश्वर कुमार को लेके चले गए, सोच रहे एक्सपीरियंस है, वो शायद 2-3 मैच के लिए ना खेले. आपको ये सब चीजें भी बड़े सारे फैक्टर्स में रखने पड़ेंगे. जैसे बोरिया ने नॉलेज, और आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा हर चीज के लिए. उसी स्पोर्ट्स टुडे वे पीपल शुड watch us and see these updates and see what these two absolute experts have to say on cricket and fantasy. Absolutely. Rajshri has just made one change to the Dream 11 selected by Boria, which is in the bowlers, and he's not gone with Udana. Your reason of selecting him, Boria? Because he bowls death. Because he bowls death and he bowls up front. Because अगर आप देखें वो पहले डालेंगे और पृथ्वी शॉ अटैक करेंगे, और अटैक करते हुए बॉल अंदर आता है उडाना का, बॉल अंदर आएगा, और बॉल अंदर आएगा. पृथ्वी शॉ इज ससेप्टेबल. या शिखर धवन बॉल बाहर जाएगा और वो स्लैश मारेंगे, पॉइंट आउट हो सकता है, स्लिप आउट हो सकता है. सो इसुरु उडाना हैज दिस अनकैनी नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स. मैं आपको एक फैंटेसी का एग्जांपल दे दूं. ये बहुत दिलचस्प गेम है. मैं उस दिन रात को इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज खेल रहा था और रात का 2 बजे गेम खत्म हुआ. ठीक है, तो मेरा टीम, मैं जीत रहा था माने बिग मनी जीत रहा था. सडनली मेरा टीम में हेदर नाइट थे वाइस कैप्टन, एंड आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि ये जो ओवर आएगा ये कैथरीन ब्रंट विकेट लेके जाएंगे, बट फॉर सम रीजन कैथरीन ब्रंट किसी दूसरे ने उनको कैप्टन बना दिया था. कैथरीन ब्रंट को विकेट मिला, डबल पॉइंट्स हो गया, वो कैप्टन थे, मैं पीछे आ गया. सो आई वाज लाइक, ओ लॉर्ड, मैं हेदर नाइट को कैप्टन बनाया था बिकॉज ऑफ द ऑलराउंड एबिलिटी. And at 1:45, I was telling myself, nonsense, I waited up to play this. Now I've lost it. Now I'll switch it off. Rubbish. And there were 2 balls left. Trust me, 2 balls. And I was in line. I was about to win somewhere around between 30 and 50,000 rupees if Heather Knight played well. And if otherwise, I was supposed to win 200 rupees. So that was the difference. Okay, so that's what happens in fantasy. So I was like, gone. So I mean, my winnings are gone. Now close your phone and sleep off. So I was watching on that app. Last ball of the match. The player gets run out. Guess who gets the run out? Heather Knight. I topple back again to the top 10 and make serious amount of money. That's what happens in fantasy. Ritima, can you just add to Boria's point here? Sure, please. When you're talking about fantasy cricket and you're talking about strategy, okay, now Boria's been playing this for what, 4-5 years, Boria? Yeah, he's been playing this for a long time. Since the time it started. Since the time it started. So he's experienced. Like Pragyan is a... I first started playing fantasy when I was in England with fantasy football. So I used to play fantasy football. And then when fantasy came to India, I moved on to playing fantasy cricket. So absolutely. Boria, I have a plan.
he has. हाँ बोलना. I have a plan. I have an offer for you. Let's join and start a business together. See, I know. With all due respect, Rajeshrida and Buryada, like the way you're thinking about fantasy, it will take some. So for me, it will take some time to understand, the dynamics, because I've always seen cricket in a very different way as a player. Buryada, you can Yeah, of understand course. as a And that's how cricketer. you should. Ultimately, Yeah. you're a champion player. Mm. So it'll take some time for me, but I'll reach you. No, Azad, Pragya, it will be Ridhiman, easier for you when you reach there because you would have been a part of all my fantasy teams. Even Pragya knows you're playing in the okay. IPL, Pragya knows One more example. One more example, Yeah. which will clarify. I know our time's up. Yeah. Hyderabad. Now, if you think 1, 2, 3, 4, how many people invested in Williamson? Go check whether it's in all the fantasy leagues. Jitna companies हैं, Dream 11, My Circle 11, Paytm, XYZ, जितना मर्जी कंपनी हो गया अभी, सब जाके केन विलियमसन पे पैसे लगाते हैं क्योंकि केन विलियमसन है, बहुत अच्छा प्लेयर है. एंड है कहाँ पे मैच था? शारजा में. केन विलियमसन कहाँ बैटिंग कर रहा है? 4 में. 4 कब आएगा? वेरी रेयर कि आपका टॉप 3 जब बेस्टो, वार्नर और मनीष पांडे हैं कि वो आउट हो जाएंगे जल्दी. हार्डली होगा शारजा में. तो केन विलियमसन का चांस तभी आएगा जब 12, 13, 14 ओवर हो चुका है. करेक्ट. सो अगर वो 12, 13, 14 ओवर में आएंगे, कितना बनाएंगे? 25-30 रन. वो रासेल तो है नहीं कि आके छक्का मारना शुरू करें. तो अगर वो 20-25 रन बनाए तो आपको कितना पॉइंट्स देंगे? वो फैंटेसी में नहीं देंगे पॉइंट्स. और अगर द प्रेशर इज ऑन, आउट हो जाएंगे. कल हुआ तो वो कितना पॉइंट्स आपको देंगे? इसीलिए मैंने केन विलियमसन को नहीं रखा था. सो दैट इज हाउ यू प्ले योर फैंटेसी गेम्स.